Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the last lecture of chapter number 9, that is exercise. So let's move. So students, now we are discussing chapter number 9, that is Kingdom Plantae, exercise. So question number 1, that is fill in the blanks. The first blank is, the sporophyte is diploid एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन. तो फर्स्ट ब्लैंक के अंदर आएगा डिप्लॉयड, दूसरी ब्लैंक के अंदर स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन, एंड द गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड एंड गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन. क्लियर? सो इस तरह से हम इसको फिल करेंगे. इसमें 4 ब्लैंक्स हैं. ब्लैंक नंबर 2, द मोटाइल. अब बुक में एक छोटा सा मिस प्रिंट है, उसको सही कर लीजिए. द मोटाइल सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव, ए सेक्शुअल की बजाय सेक्शुअल. द मोटाइल sexual reproductive cells are characteristic of bryophytes, blank में आएगा bryophytes, and are called gamecops. Clear? Blank number 3, the sexual reproduction is said to be oogamous or heterogamous if the two fusing gametes are different. तो hetero का मतलब ही different होता है. So heterogamous कब होंगे? जब 2 different gametes, means like egg cells or sperm cells, these are different gamete cells. So that is how. So the sexual reproduction is said to be oogamous or the heterogamous if the 2 fusing gametes are different or heterogamy. Blank number 5, it says, in the stem of monocotyledons, the bundles are scattered, while in the stem of dicotyledons, they are arranged in a ring. Blank number 6, it says, the double fertilization is the characteristic feature of class Angiospermae or flowering plants. Blank number 7, it says, the stem roots and leaves are the non-reproductive or vegetative parts, and flowers, fruits, and seeds are the reproductive parts of the plant. Blank number 8, it says, heterospory, blank mega, heterospory is the phenomena of the production of 2 kinds of spores in the plants. And last or 9th blank is, the naked seeded plants are included in the group Gymnospermae. Now the short questions. So the first short question is, question number 2, short question. The first short question is, how are ferns better adapted to life on land than liverworts and mosses? So the answer is, liverworts and mosses are non-vascular, while the ferns are vascular. Vascular tissue is involved in the support and transport of water and food and minerals, etc. etc. इसका B part है question number 1 का, which of the following are nutritionally self-supporting? Clear? Which one of the following are nutritionally self-supporting? So, number 1, the mature liverwort and moss gametophyte. And number 2 is mature liverwort and moss sporophyte. So, dear student, the mature liverwort and moss gametophyte are nutritionally self-supporting. Clear? Question number 2, it says, the chances of survival and development of wind-blown pollen grains are much less than those of spores of Adiantum. Comment on this statement. तो हमें इसमें comment करना है. The chances of survival and development of wind-blown pollen grains are much less than those of spores of Adiantum. So, you know, wind-blown pollen grains are widely dispersed and mostly are lost due to unfavorable conditions, while the spores of Adiantum usually fall on a nearby moist place and they immediately germinate. Its part B is, question number 2, part B, account for the fact that megaspores are large and microspores are small. So megaspore, it is a 7-cell containing structure, while microspore, it has 2-cell structure. ठीक है? It is a 2-cell structure. So that is why mega का मतलब बड़ा और micro का मतलब small. And its part C is, what important advantages have angiosperms made towards the seed plant habit? So 2 important adaptations इसमें हम लिखेंगे. एक तो seed enclosed
इन फ्रूट्स एंजियोस्पर्म्स में आपको पता ही, जैसे आम खाते हैं या सेब खाते हैं तो फ्रूट के अंदर ही सीड मौजूद होता है। दूसरा, इनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन, तो एक फर्टिलाइजेशन से जाइगोट और जाइगोट से एम्ब्रियो, और दूसरी फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म टिश्यू, और एंडोस्पर्म टिश्यू से आके उनके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो वहीं से मिलेगी इनको। क्वेश्चन नंबर 3, इट सेज राइट ए नोट ऑन alternation of generations. तो dear students, alternation of generation हम पढ़ चुके, the mechanism by which a multicellular diploid sporophyte generation alternates with another multicellular haploid gametophyte generation. This phenomenon is called as alternation of generation. Clear? और land plants के अंदर it is heteromorphic alternation of generations, क्योंकि heteromorphic का मतलब दोनों ही different होते हैं, gametophyte की shape भी डिफरेंट होती है और स्पोरोफाइट की शेप भी डिफरेंट होती है और एक दूसरे के साथ ये अल्टरनेट करते हैं रेगुलरली, सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग? ए, सीड। सो सीड, डियर स्टूडेंट्स, इन हायर वेस्कुलर प्लांट्स सीड इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पोरोफाइट, तो सीड से न्यू स्पोरोफाइट बनती है, एंड इन सम केसेस इट इज आल्सो यूज्ड एज फूड। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट बी, double fertilization. So dear students, double fertilization ensures the formation of fruit and seed and maximum supply of food for the nourishment of the development of embryo. Clear? Question number 4, part C, heterospory. तो heterospory का जो importance ये है कि it is the production of different types of spores. One is large in size, that is megaspore, and it is the female spore, while the other is the microspore, which is the male, which produces the male gametophyte, and male gametophyte will produce the male gametes, so that is the importance. Now, the question number 5. So, pick and match the following. हमें नीचे कुछ यहाँ पर दिए गए हैं different about 10 statements दी गई हैं। इसका हम उसी तरह से पहले कॉलम 1 के अंदर वो तमाम स्टेटमेंट्स लिख लेंगे जो हमें एक साइड पे गिवन है 1, 2, 3 की शक्ल में, और उनके ऑपोजिट जितनी भी लिखी हुई हैं उसको कॉलम 2 में लिख लेंगे, और फिर इनके सामने एक कॉलम 3 बनाएंगे जिसमें हम इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, सो उसमें करेक्ट आंसर हम लिखेंगे। सो फर्स्ट कॉलम में द फर्स्ट वन इज़ फर्न स्पोरोफाइट, तो हमने जो सेकंड कॉलम है उसमें से सही चूज़ करके और उसको आंसर वाले कॉलम यानी थर्ड कॉलम में लिखना है। सो फर्न स्पोरोफाइट, इट इज़ अ डिप्लॉयड जनरेशन, answer is diploid generation. Number 2, the moss plant is gametophytic generation. जो moss plant है, it is gametophytic generation. Number 3, the gamete are haploid cells. मैं इनके सामने इधर से फर्स्ट कॉलम और उसके आगे उसका करेक्ट आंसर थर्ड कॉलम वाला बता रहा हूँ। Number 4, the spores are asexual reproductive structures. Now, number 5, vegetative reproduction, इसके सामने करेक्ट आंसर इसका आएगा, इन्वॉल्व्स वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। नंबर 6, द oospore is the last cell of gametophyte. It is the last cell of gametophyte, oospore. Now, number 7, the gamete is the first cell of gametophyte. Okay? ये gametophyte का first cell होता है, और now number 8, the spore mother cell divided by reduction division to form haploid spores. It divides by reduction division, means the meiosis, to form haploid spores. Number 9, the spore, और इसका correct answer है, is the first cell of sporophyte, and gymnosperms are the plants with naked seeds. So first column के अंदर वो तमाम parts, second column के अंदर उन्होंने उसको intermingle किया हुआ है, उनको उनकी तरतीब को आगे पीछे किया हुआ है, और कॉलम नंबर 3 यानी कि आंसर वाला कॉलम, उसमें मैंने उसको आपके साथ हर एक के साथ मैचिंग उसका आंसर समझा दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ईच क्वेश्चन हैज़ 5 ऑप्शंस, एनसर्कल द करेक्ट आंसर। तो हमें नीचे 5 ऑप्शंस दी गई हैं, उसमें हमने करेक्ट आंसर पर जो है उसको चूज़ करना है। द फर्स्ट MCQ इज़ ऑल ब्रायोफाइट्स लाइक mosses, liverworts and hornworts share certain characteristics. These are option alpha, reproductive cells in protective chambers and vexicuticle. Yes, it is true. Beta option, a vexicuticle, true leaves and reproductive cells in protective chambers. तो dear students,
ब्रायोफाइट्स में ट्रू लीव्स नहीं होते, तो ये ऑप्शन गलत हो गई। ऑप्शन चार्ली, वेस्कुलर टिश्यूज, ट्रू लीव्स एंड वैक्सी क्यूटिकल, तो वेस्कुलर टिश्यू इनके अंदर होता ही नहीं है, ब्रायोफाइट्स हैं, ये नॉन वेस्कुलर हैं, ये भी गलत हो गया। ट्रू लीव्स ये भी अभी नहीं है। डेल्टा ऑप्शन, रिप्रोडक्टिव सेल्स इन प्रोटेक्टिव चैम्बर्स एंड वेस्कुलर टिश्यूज, तो वो तो ठीक है, लेकिन वेस्कुलर टिश्यू इनके अंदर नहीं है, ब्रायोफाइट्स हैं, सो ये भी कंसिडर नहीं करेंगे। एंड लास्ट ऑप्शन एप्सिलॉन, वेस्कुलर टिश्यूज एंड वैक्सी क्यूटिकल, सो अगेन वेस्कुलर टिश्यू तो है ही नहीं, ब्रायोफाइट्स दे आर नॉन वेस्कुलर, सो एक ही ऑप्शन हमारे पास सही है, दैट इज ऑप्शन अल्फा, दैट सेज reproductive cells in protective chambers and waxy cuticle. Now, MCQ number 2, it says, a heterosporous plant is one that, heterosporous plant वो होगा जो कि, option alpha, produces gametophyte that bears both sex organs. So, that doesn't make any sense. And beta option, produces microspores and megaspores in separate sporangia, giving rise to separate male and female गैमीटोफाइट्स, यस इट इज़ ट्रू। तो हेट्रोस्पोरस जो प्लांट है उसमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स मतलब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, और वो स्पोर कहाँ पर बनते हैं? इन द रिस्पेक्टिव स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोर्स इन माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोर्स इन मेगास्पोरेंजिया। ऑप्शन सी इज अ सीडलेस वेस्कुलर प्लांट, सो नो दैट्स नॉट करेक्ट। ऑप्शन डेल्टा is produces two kinds of spores, one asexually by mitosis and one type by meiosis. No, so इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। हेट्रोस्पोरे में वो एक meiosis और दूसरा माइटोसिस से बने, that is not. And epsilon is reproduces only sexually. So जो most appropriate answer for this MCQ number 2 is beta option. That is a heterosporous plant is one that produces microspores and megaspores in separate sporangia, giving rise to separate male and female gametophytes. MCQ number 3, it says the male gametophyte of an angiosperm is, जी डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन सही नज़र आ रही हैं, लेकिन हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट को जो है उसको मार्क करना है। एल्फा ऑप्शन इज एंथर, तो वो एंथर इज नॉट द gametophyte. बीटा ऑप्शन इज एम्ब्रियो सैक, दैट इज द फीमेल gametophyte. सी और चार्ली ऑप्शन इज माइक्रोस्पोर, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसिडर किया जा सकता है। डेल्टा ऑप्शन इज जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन, सो दैट इज एक्चुअल आंसर। एंड एप्सिलॉन इज ओव्यूल, तो ओव्यूल इज रिलेटेड टू फीमेल gametophyte, यहाँ पर मेल gametophyte की बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, द मोस्ट क्लोजेस्ट एंड द मोस्ट एक्यूरेट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन, उसको हम कहते हैं मेल gametophyte of angiosperm. The last MCQ is important terrestrial adaptations that evolved exclusively in seed plants include all of the following except. तो जो जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनके अंदर जितने भी अडेप्टेशंस आई वो नीचे दी गई हैं, उनमें से एक है जो कि मैच नहीं करती। द फर्स्ट वन, अल्फा ऑप्शन, पॉलिनेशन बाय विंड और एनिमल instead of fertilization by swimming sperm. Yes, that is important. ये तो ठीक है, हमने कौन सी ढूंढनी है जो इसमें नहीं है। बीटा ऑप्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू वेस्कुलर टिश्यू, डेफिनेटली वेस्कुलर टिश्यू से ही वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सीड प्लांट्स की बात कर रहे हैं, मतलब कि ट्रैकियोफाइट्स की। ऑप्शन चार्ली, रिटेंशन ऑफ gametophyte प्लांट विद इन द स्पोरोफाइट, यस इट इज़ ट्रू। एंड डेल्टा ऑप्शन इज डिस्पर्सल ऑफ न्यू प्लांट्स बाय सीड्स, तो यहाँ पर डिस्पर्सल ऑफ न्यू प्लांट्स कहा गया है, नए प्लांट्स सीड्स के जरिए डिस्पर्स नहीं होते, क्लियर? सो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। एंड एप्सिलॉन इज प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो विद इन द सीड, दैट इज ट्रू। सो द ओनली रिमेनिंग ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट इज डेल्टा ऑप्शन, दैट सेज डिस्पर्सल ऑफ न्यू प्लांट्स बाय सीड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज के लेक्चर में आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।